ओके, प्रैक्टिस करते हैं। ड्राइंग पे देखिए यहाँ पे सिंपल उसका जो आउटर सर्कल है वो यहाँ पे दिया गया है 70 डायमीटर एंड देन ये 16 डायमीटर। ओके, इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे 20 है एंड देन ये जो व्यू आपको शो किया गया है ये सेक्शन व्यू, यहाँ पे जो उसको कट करेंगे तो जो व्यू मिलेगा वो यहाँ शो किया गया है। ठीक है, इसे बनाते हैं। देखिए तो 70 और 60 यहाँ पे मैं लेता हूँ स्केच एंड देन और मैं फ्रंट प्लेन लेता हूँ इसमें। ठीक है, नेक्स्ट circle and then okay, take smart dimensions, sorry, right click and take smart dimensions, specify the diameter. Take smart dimensions, 70 diameter and then 16 diameter. Okay, next यहाँ देखिए यहाँ पे इसके पास से भी देखेंगे इसमें ये जो सर्कल ड्रॉ किए गए हैं यहाँ पे पीसीडी जो है इसका 32 है। ठीक, ये एरो यहाँ पे बना है, पीसीडी इसका 32 पीसीडी पर ये सर्कल ड्रॉ हुए हैं तो उनको ड्रॉ करेंगे। ठीक, नेक्स्ट मैं यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ। ओके, टेक स्मार्ट डायमेंशंस एंड टेक 32। ओके, एंड सेलेक्ट द सर्कल फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसमें एंड अगेन टेक सर्कल और ड्रॉ ऑन क्वाड्रेंट and right click, take smart dimensions, okay, 5 diameter. ठीक है, next and again circle sketch pattern and select this circle and यहाँ पे आप delete it and select this circle. Now number of item आपको चाहिए 6. Okay, now sketch is fully defined. ठीक है, then again यहाँ पे देखिए इसमें ये सर्कल यहाँ ड्रॉ है। ठीक है, इस सर्कल का जो डायमीटर है वो 9 है, थ्रू आउट है ये भी, और इसके लिए जो यहाँ पे इसका पीसीडी जो गिवन है वो 54 है। ठीक है, और ये 4 सर्कल हमें ड्रॉ करने हैं एंड टेक सर्कल एंड ड्रॉ इट, टेक स्मार्ट डायमेंशंस 54, 54 डिस्टेंस पर एंड देन ओके, select circle and for construction and take circle or draw here, right click and take smart dimensions as 9 diameter. Okay, now and select circular sketch pattern, select the circle and delete it or select the sketch. Number of item 4 चाहिए हमें। ठीक है, and again select the circle or make horizontal and select the circle center point and the circle point made vertical. Our sketch is fully defined. Here right click on it and extrude it boss face. Okay, select the contour and delete it and then इसकी जो width है वो आपको देनी है 20। ठीक है, ओके, ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। देन यहाँ पे अभी हमें सेम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करने हैं, वो 10 डायमीटर की करनी है, 5 डेप्थ तक यहाँ पे कट करना है एंड सेलेक्ट द सरफेस एंड स्केच। नाउ कन्वर्ट एंटिटीज की जरूरत नहीं है वैसे इसमें, सेलेक्ट द सर्कल एंड टेक स्मार्ट डायमेंशन, स्पेसिफाई 10 डायमीटर, 10 डायमीटर। ओके, नाउ टेक circular sketch pattern, select the circle and the circle. Okay, number of item आपको चाहिए 6। ठीक, and okay, now right click, exit from sketch and then feature extruded cut, और extruded cut की जो आपको वैल्यू चाहिए वो देनी है आपको 5। ठीक है, सिर्फ
5 and so I hope कि क्लियर हुआ होगी। देन राइट क्लिक अपीयरेंस पार्ट और यहाँ पे आप इसे एक कलर दीजिए, ठीक है, मैं कलर ही देता हूँ। देन ओके, नाउ व्हाइट प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट फाइल एंड देन सेव द मॉडल, अगेन फाइल, make drawing from parts and browse your standard sheet, okay, drawing model, do left click on it, प्रीव्यू ऑन कीजिए, यहाँ से जो भी वो आप प्लॉट कर रहे हैं वो आपको शो होगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट ओके, एनोटेशन मॉडल और यहाँ पे एंटायर मॉडल, इंपोर्ट आइटम इनटू ऑल व्यूज एंड देन ओके, जो भी डायमेंशंस आपने लगाई हैं वो यहाँ शो हो जाएंगी, ठीक है। जो मैच हो रही है आप उनको दोबारा से देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट एंड सेम फॉर 32 एंड देन 5 एंड 10, ओके, डिलीटेड क्योंकि यहाँ भी ऑलरेडी है यहाँ पे, और मुझे उस होल्स की जो है डिटेल यहाँ शो करनी है, तो उसके लिए मैं लूँगा होल कॉल आउट एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा इसको, ये शो कर दी इसमें कि यहाँ पे जो डिटेल इसकी है। देन अगेन सेम यहाँ के लिए भी मैं दे दूंगा इसको होल कॉल आउट एंड इसको यहाँ शो कर दूंगा थ्रू आउट, ठीक है। नाउ ओके, देन सेलेक्ट द फेस एंड अदर, और ये जो फेडेड दिख रहा है फॉर्मेट सेलेक्ट कीजिए, डार्क शो हो जाएगा, ठीक है। यू कैन डिलीट इट, ठीक है। नेक्स्ट देन अगेन व्यू एंड देन सेक्शन व्यू, और इसको हॉरिजॉन्टली कट करेंगे इसमें एंड देन ओके, और इस व्यू को यहाँ पे शो करेंगे हम एंड राइट क्लिक एंड देन ओके, एनोटेशन मॉडल एंड देन फीचर, सेलेक्ट द फीचर एंड ओके, ठीक है। जो यहाँ पे हमें डायमेंशन चाहिए वो हमें यहाँ पे बाकी इनकी तो हमें जरूरत है नहीं यहाँ पे, ऑलरेडी हमने वॉश की हुई। एंड अगेन ड्राइंग सेक्शन व्यू, इसका एक सेक्शन व्यू ले लेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे एंड देन सेट इट विद एज, राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक यहाँ पे कीजिए, ओके, एंड अगेन फाइल एंड देन सेव एज टाइप कीजिए इसमें एडोबी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ जनरेट हो जाएगा एंड देन प्रिंट। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सॉलिडवर्क्स सीरीज को फॉलो करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम कंटिन्यू इस पे अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू।